Good afternoon, all of you, and here is the analysis of the question paper on 4th April 2024, which is today, shift 1. And overall, I read question paper was medium to difficult. In fact, it was a bit on easier side also, as again, as expected, most of the question were repeated, not only from 2023 papers, but itself from 2024 Jan session. Okay, as will tell you, because I've already discussed 2023 papers and January sessions paper, and a smart way of doing that. And as you can clearly see, most of the questions are direct copies just with data change. Okay, of course, when I'm telling most of them, means even if 10 questions are direct copy with data change, that means a lot, because you can easily hit 99 plus percentile with that. Anyway, let's start with the first question. So here I have almost 21 questions, and I think 2 or 3 are repeated over here. So f of x was given, and they have defined f of mod x plus mod of f of x. Again, it's a standard problem available in most of the coaching institute, but let's see how we can solve out this. The best way is to draw a graph. So at 0 to 2, it's x minus 2, so 0 will get minus 2, and at 2, it's going to be 0. So roughly, our function will be linear in this interval, and it's minus 2, so it's constant from minus 2 to 0. Okay, and as you can see, the question is damn easy because mod of f of x will simply be reflection of this. So this height is at 2 now, and this is also going to be minus 2, right? So this is mod of f of x. And what is f of mod of x? Okay, so f of mod of x, if I'll take different color, it will be just reflection of this graph in y-axis, right? So it will pass out 0. And as you can see, you have to basically integrate this plus this. It means I have to add this curve with this one, right? So it's not very difficult, because when I'll add this guy with this, it's going to be 0 anyway. So let me use different color. And this will become twice, because at 2 answer was 0. And the curve was x minus 2, so it will become 2x minus 4, right? 2 times x minus 2 till here. And moreover, again we are having the same, because this branch is reflection of that. So as if you'll see the equation of this, so we have x is going to minus 2 and y is going to minus 2. In that sense, it becomes x by minus 2 plus y by minus 2 equals 1. So x plus y equals minus 2, right? So y equals minus 2 minus x. And in that you are adding a value of 2. So this just becomes y equal to x. Right? So overall we know the graph will look something like this. So what is area of this? So k, the height is going to be 2 into k minus 2. And this height itself is k minus 2. So integration from 0 to k h of x is equal to half into base, and that will give this area, which is k minus 2 into 2 times k minus 2. So to get 2, it's going to give 0 answer. So in that sense, 0 will come. But if k is more than 2, then the answer will be half into base into height, half into k minus 2 into 2 into k minus 2. So it will depend on the value of k. Okay, whether k is more than 2 or less than. So there must be some restrictions which they have not mentioned. But this is the way of solving this. Find the sum of rational terms of the expression. Now this is quite easy, because you know the rational terms will come if and only if it is an LCM of 3 by 5 and 3. Because any general term can be written as NCR, 15 CR, 2 to the power 1 by 5 to the power R, and 5 to the power 1 by 3 ka power 15 minus R, which basically evaluates to the power R by 5 and 5 ka power 15 minus R by 3. So now we clearly know if you want rational terms, R by 5, okay, must be integer, and so is R by 3, because 15 by 3 is already integer. So 5 ka power is 5 minus R by 3. So if R by 5 is integer and R by 3 integer, R must be the multiple of 5 and R is multiple of 3. So R must be multiple of 15. The only multiple of 15 here will be 0 and 15.
So just you have to take first term, which is 15c0, and 5 to the power 5 will come, right? And 15c0 is 1, and we have last term. So last term is 15c 15, so this will give 1, and that will give 2 ka power 3. So 8 plus 5 ka power 5 will be the answer. Just you can check this. Third question is directly from generalizations. Okay, they have only changed this data. So mean, median, about mean is already known, variance is known. Okay, so variance is sigma x square y minus mean square. So with that directly you can get this answer. Next is f of x is given, and they have considered a function g of f of x is x. Gof means g of f of x is x. Now this is inverse function. It means g is inverse of f. In general, if the function is 1 1, in fact you can check like it will be 1 1 because it's strictly positive. Even if you don't know inverse concept, it is fine. So the point is, once you recognize this, question was straightforward because we want g dash 2. So if I'll blindly differentiate, we'll get g dash f of x into f dash x equals 1. अब g dash 2 के लिए we want f of x to be 2. Okay, so f of x 2 के लिए for what magical x we'll get this as 2. That's not very difficult. You can easily see x equal to 0 works in this kind of question. आप guess कर सकते हो 0 1 plus minus 1 से, तो x 0 पे अगर डालेंगे so it's giving 2. Now how it is sure there is no other value which will work because f dash x is positive. F dash x is positive, so function is strictly increasing. So that's the only value. Anyway, it means x equal to 0 if I'll put in this expression, it will give 2. So g dash f of 0 into f dash 0 is 1. So g dash 2 will become 1 by f dash 0. Now what is f dash? 5x4 plus 1 by 2 into e ka power x by 4. So f dash 0 is going to be half. Okay, so what they want? 8 into f dash 0. So 8 into 1 by 8, and 4 is the answer for this problem. So it was also an easier one if you know chain rule. Next, ये the direct question है. Same question I have done using trick also. If there was options, again आप eliminate कर सकते हैं because sin x cos x का definitely it will be what? Less than 1. Okay, or in fact you can multiply with 2, so it will be less than half even. So this value denominator will be lesser than 3 by 2. It means, and sin square itself is lesser than 1. तो वहाँ से by window I am sure like with option elimination you could have done that. अगर वो नहीं तो this question was easy also because sin and sin cos whenever is there you can divide by cos square. Cos square will make it secant square and that will give 10. Now this is ऊपर वाला is secant square x and नीचे वाला is 1 plus 10 square x plus 10x. Now you put simply 10x as t and the question becomes dt by 1 plus t square, and it's a standard problem. Sixth one is directly taken from the last paper discussion which I have taken. This is again repeated question from JEE Mains 2024 session only. I don't know why they are just repeating. They could have at least repeated problems of 2023. Not exactly in terms of data, but instead of 7 black and 5 red, they were having 10 white and this. You can see the last video just which I posted. Similar problem was there. And it's conditional probability, same thing. I have told you it can come from 3 bags actually. Here there are only again 3 bags. So that's fine, similar exactly. And then it can be red, black. So out of these path, what is the proportion of this path? Next is domain of function. और domain के लिए this must go from -1 to 1. ठीक है, अब उसको भी you can smartly solve. ठीक है, you can take 3 common. 3 by 2 you can take common. X minus 22 by 3 and it will be x minus 19 by 2. Now you write 22 by 3 as 19 by 2 plus something. So 1 plus something. वहाँ से you'll get a restriction on x. Okay. And next is log e this quantity. अब this quantity, of course, like you have to find the range of this. But here it was easy because you can clearly see this can be factorizable. क्योंकि ऊपर को we can लिख सकते हैं 3x square minus 5x minus 3x plus 5. तो ऊपर वाला तो 3x common लेके 3x minus 5 and minus 1 common के 3x minus 5. So numerator become x minus 1 and 3x minus 5. What about denominator? Again we can write x square minus 3x. 3x को क्या लिख सकते हो 5 to 2x minus 5x, right? 2x minus 5x minus. So clearly x into x plus 2 ऊपर वाला minus 5 into x plus 2. So we have x minus 5 into x plus 2. So although it's factorizable, but none of the factors are cancelling. So that should be your first check, because even if they are cancelling, let's say if denominator also become x minus 1 as a factor,
that we can cancel provided x is not 1. So for 1 we'll check independently whether it is coming in the range or not. अब anyway अब आप इसके रेंज के लिए भी कुछ खास नहीं था क्योंकि सपोज restriction on x will come from here. Now for log e2 we define this quantity should be just positive, that's it, strictly positive. ठीक है, as long as it is strictly positive it's fine. तो आपको कुछ करना देखो कि नीचे वाला देखो, नीचे वाला सो वी वांट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. अंदर व्हाट रेस्ट्रिक्शन टू है, नीचे वाला का d विल बी व्हाट 9 माइनस 4ac, सो इट्स ऑलरेडी मतलब इट हैज़ रियल रूट. तो अब तो हम ये दिखा लिया ना दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव. सो इफ इट इज़ पॉजिटिव अब आप वे भी कर्व से आप आसानी से चेक कर सकते हो. वे भी कर्व से कैसे करेंगे, 1 we have -2, we have 5 and 5/3. So more than 5 you can clearly see positive, negative, positive. So for this to be positive we have in interval what 1 to 5/3, 5 से infinity and minus infinity -2. Okay. अब फिर यहाँ से भी वन इंटरवल you'll get. अब इसका कॉमन पार्ट you have to take intersection of this and that's it. अब the other way is you could have checked. First you do the restrictions on the log wala and then check for 1 to 5/3. Roughly you can check whether it is coming in that window. Okay, तो वो विंडो होगा. Since they have already given alpha and beta is a domain, तो clearly domain में ये तो नहीं आएगा ना बाबू, -2 से माइनस इन्फिनिटी वाला नहीं आएगा. So maybe x is restricting some, क्योंकि -2 पे if I'll find the value it will be what -6 -28 by -23. Okay, -6 yeah. So clearly -2 से पीछा वाला इज़ नॉट वर्किंग, तो ये वाला तो ऐसे ही चले गया, नॉट पॉसिबल, राइट. सिमिलरली आप 5 के आगे मीन्स यू कैन चेक बिकॉज इफ आई टेक 550 माइनस समथिंग फ्रैक्शन येस इज पॉसिबल. सो मे बी आफ्टर 5 ऑल्सो सम इंटरवल इज हैपनिंग. 1 to 5/3 if we'll take a value let's say something between 1 and 5/3. Okay, so that can also tell you whether it's possible or not. So just have to check for one interval. So in this way even you can do, or the best way इतना दिमाग नहीं लगाना है तो -1 से 1 का x का रिस्ट्रिक्शन लाओ और ये फैक्टराइज करके रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या ना, अगर कोई बच्चा इसको ओमिट किया और मान लो इसको ब्लाइंडली मल्टीप्लाई कर दिया इससे और सिर्फ वो इतना ही तब लाएगा x -1 × 3x - 0, फिर गलत आंसर आ जाएगा क्योंकि यू कांट मल्टीप्लाई. ओके, वाई यू कांट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्वान्टिटी वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव वो पता ही नहीं है. ठीक है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. अगर ये पॉजिटिव होता है डिनोमिनेटर तब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल -2 इज मोर देन -5. इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 -10 इज मोर देन -25 इज करेक्ट स्टेटमेंट. बट इफ आई मल्टीप्लाई द ओरिजिनल स्टेटमेंट बाय -1, 2 इज मोर देन 5 रॉन्ग हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स इनइक्वालिटी में पॉजिटिव है या नहीं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था. सो इट वॉज फाइन, बहुत टफ नहीं था, इट वॉज ओके. स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. अब सर्कल दिया हुआ है, सेंटर क्लियरली 5 और 3 है. ठीक है, तो 5 3 लगभग यहाँ. रेडियस भी आपको दिया हुआ है 25 + 9 विच इज़ 34 - 30, सो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ओके, सो द सर्कल इज क्लीन द फर्स्ट स्क्वायर. वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू y = x + 3. द वर्टिसेस ऑफ x स्क्वायर इज द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड सिग्मा x स्क्वायर. ठीक है, अब क्वेश्चन अगेन इज नॉट क्लियरली प्रॉपर बट फील तो आ रहा है क्या पूछ रहा है. सो बोल रहा है वन साइड ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल टू y = x + 3. मीन्स स्लोप जो होगा एक स्क्वायर का वो आपको पता है. ठीक है, एंड स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इज अ सर्कल, तो सर्कल के अंदर स्क्वायर. आई नो अब द स्लोप ऑफ दिस लाइन लाइक वन साइड, सो इट्स मेकिंग 45 डिग्री यहाँ पे. तब तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि इफ़ नाउ दिस इज ए स्क्वायर. ठीक है, सो अब ये कम्प्लीटली सिमेट्रिक होगा. मोर एवर दिस इज 90, सो ये डायमीटर पे ये होगा एंड मोर एवर दिस टू गाइज आर सेम. ओके, इट मीन्स द डायगोनल मस्ट पास थ्रू, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. राइट, अब यहाँ पे यू ऑलरेडी नो वन ऑफ द कॉर्ड जो है इट इज हैविंग स्लोप 1, तो दूसरा कॉर्ड का क्या हो जाएगा स्लोप, नटली -1. क्लियर. तो अब आपको पता है क्योंकि ये 1 पॉइंट यू ऑलरेडी नो. अब यहाँ से सो वर्टिसेज x1 y1. सो इफ यू नो द वर्टिसेज x1 y1, सपोज द स्क्वायर का वर्टिसेज दिस इज x1 y1. ओके, अदर इज लेट्स से x2 y2, अदर इज x3 y3.
तो आपको हाउ विल यू फाइंड सिग्मा ऑफ x1 इसका वाई इसका, तो अब दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. एक तो है जो मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x3 जो है दैट इज ऑल्सो 2. सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ x2 एंड x4 इज ऑल्सो 2. सो फ्रॉम देयर डायरेक्टली विल गेट वन रिलेशन. ठीक है. अदर रिलेशन इन दिस वर्टिसेस विल गो फ्रॉम द स्लोप, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस यू नो इट्स 1 एंड स्लोप ऑफ दिस, तो वहाँ से डायरेक्टली विल गेट x1 y1 का वैल्यूज. ठीक है. Moreover, you could have used complex number here also, like rotation theorem of complex number, where you take a vectors and rotate it by some angle theta. So e ka power I theta into some complex number will basically be a new complex number rotated by e ka power by theta. So if this is z, it will be z e to the power I theta. तो वहाँ से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आया था. ये ठीक था, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी सिमेट्रिसिटी सब किल कर सकते थे. तो सॉल्व करके चेक कर लेना. 2 6 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इन दिस मस्ट बी सेम. तो 24 को इफ आई डिवाइड बाई 24, okay, so now you can know the coefficient a is 1 by 24 and b is by comparison minus 1 by 3. अब once you know a and b, इसमें पुट कर दो और एक इक्वेशन ले आओ. दिस इज एनसीईआरटी लेवल. Sum of maximum minimum value of expression. Again, this is a standard question. You put y equals to this, and you'll get a quadratic. अब इसको ऐसे भी कर सकते हो. 2x square plus 3x plus 8 minus 6x divided by 2x square plus 3x plus 8. So that will give you 1 minus 6x by 2x square plus 3x plus 8. अब डिसएडवांटेज इज क्योंकि ये टर्म सब सेम सिमिलर था, तो यहाँ से फास्ट कैलकुलेशन अगर किसी को करना है तो x से फिर डिवाइड कर दो. 2 plus 8y(x) plus 2x plus 8y(x). ठीक है. एंड नाउ यू कैन चेक इट्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. क्योंकि इफ आई टेक लेट्स से z एज 2x plus 8y(x), so clearly x dz by dx is going to be 2 minus 8y(x) square. तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2. ठीक है. सो इफ आई टेक x इक्वल्स 2, वहाँ पे लिटरली 4 and 4 8 11. सो क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, क्योंकि व्हेन x इज इन्फिनिटी दिस विल गो टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो फंक्शन तो ये तो ऑड दिख रहा है 2x plus 8y(x). सो 2 पे मिनिमम आएगा एंड कुछ लोकल मिनिमम आएगा एंड अगेन इट विल गो टू इन्फिनिटी एंड सिमेट्रिक. सो व्हेन इट इज गोइंग टू इन्फिनाइट क्लियरली इट्स 1, तो एक तो 1 वैल्यू कंटेन करेगा. व्हेन इट्स गोइंग टू 2, व्हेन दिस इज 2, सो 4 plus 4 8 11. Okay, 1 minus 6 by 11, that is giving you 5 by 11. Okay, so if one value is the sum of maximum minimum value, maximum is 1 and this is 5 by 11, then you are getting 16 by 11. 16 by 11, ठीक है. -2 पे व्हाट यू आर गेटिंग, -4 and again -4 plus 3, which is -5. So we'll give 1 plus 6 by 5, right? So 11 by 5. So anyway, we are getting minimum value of this expression is going to be 11 by 5 and the maximum value वो 1 को अप्रोच करेगा. ठीक है. तो वहाँ से आप वैल्यू पुट करना. आई थिंक ये ऑप्शन है वो सही नहीं है, आप एक बार चेक कर लेंगे. ठीक. नेक्स्ट इज इफ द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 15 एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल फ्रॉम ऑरिजिन दिस. अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही देगा. फोकल कॉर्ड लेंथ you already know, right? The parabola. So if it is a comma 0, it's 2 to a. So length of focal cord is 15. So there is a focal cord whose length is 15. So clearly it will not be lattice rectum, right? So it will be some inclined focal cord. Distance of focal from origin. Now there is direct formula for finding length of focal cord, which is 4a cos secant square theta. ठीक है. अब 4a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4x 12. So it will be 12 by sin square theta. This is given 15, so you know the orientation of this focal cord. The distance of focal from an origin is theta पता है तो आपको focal length भी पता है, it's 3, 0. So once you know theta, you know the equation of this chord.
Once equation is known, distance from origin to a line, distance formula. Question 12, घिसा पिटा क्वेश्चन है, अगेन चाइनीज स्पीसीज अलजेब्राइक, सेम क्वेश्चन विच आई एक्सपेक्टेड. 2 का पावर x किलो का किंग्स लगाने पे एक बार किंग लगाओगे एंड यू विल बिकम किंग. 13 क्वेश्चन, बच्चा अल्फा इज मिसिंग इन द क्वेश्चन. एनीवे लेट्स डिस्कस द आइडिया. 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर. दिस इज साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू 1/4 विच इज बेसिकली 1/2 विल बी द लिमिट. तो वही आएगा ना, या. और दूसरा को यहाँ पे बस आपको ध्यान देना, 1 माइनस कॉस एक्स इज मॉड ऑफ, ओके, मॉड ऑफ √2 साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स. लेकिन एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव तो ये मॉड विल ओपन डायरेक्टली लाइक दिस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2/2 1/√2. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिया होगा अल्फा और बीटा में कनेक्शन इनटू बीटा है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई थिंक यू विल गेट बीटा इफ यू विल इक्वेट दिस टू 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो बीटा विल बी 1/√2. ऐसे ही अल्फा से कुछ और कंडीशंस होगा बिकॉज अल्फा इज मिसिंग समवेयर बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी बेस, तो वहाँ से आप ला सकते हो. तो आई होप आइडिया इज कुछ नहीं था. यू पुट इन दिस लिमिट को इक्वल करो. दिस इज अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन विच आई डिस्कस जस्ट इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर. Next is z bar square plus mod is 0 and alpha is the sum of root and beta is product of non-zero root. Clearly 0 is the root, so that's why we are asking non-zero root. Then find alpha square plus beta square. One way is put z equal to x plus iy. लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट हो तो यहाँ से you can take z bar square is minus mod z. ठीक. Now some of you will take, sir, how something is square linear array? It's possible because you are in complex number world. So if we will take mod on both side again, so mod z bar whole square I can write is mod z. मॉड ऑफ मॉड ही हो जाएगा. मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज मॉड जेड स्क्वायर इज मॉड जेड. इसका मतलब मॉड जेड आइडर 0 होगा और 1 होगा. इफ मॉड जेड इज 0 सो ओनली पॉसिबिलिटी जेड इक्वल टू 0. ठीक है, और जेड इक्वल टू 1. नाउ इफ जेड इक्वल टू 1 अंडर दैट कंडीशन आई कैन मल्टीप्लाई इफ जेड इक्वल टू 1 देन जेड बार इक्वल टू 1 क्योंकि दैट इज मॉड जेड स्क्वायर. मॉड जेड इज 1 और मॉड जेड इज 0. सो इफ मॉड जेड इज 1 जेड बार इज 1. तो वहाँ से हम जेड बार को क्या लिख सकते हैं, देखो जेड बार को लिख सकते हैं 1/z स्क्वायर, ठीक है ना. और मॉड जेड को लिख सकते हैं, ये तो 1 आ गया इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना जाएगा 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1. सो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. सो जेड इक्वल टू +-1. तो यहाँ से जो आपका रूट्स आया वो आया 1 -1 0. और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रूट आया वो -1 आ गया. ठीक है, एक बार चेक कर लेना मेरा कैलकुलेशन. लेकिन आइडिया ये बहुत फास्ट आपको देखो सॉल्यूशन दे रहा है. तो अल्फा क्या है, अल्फा इज सम ऑफ रूट. अल्फा तो ऐसे ही 0 हो गया. बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, 1 एंड -1 का प्रोडक्ट 1. तो ये हो गया 4 × 1 4 इज आंसर. ऑप्शन है क्या, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग 5 6 6 पॉइंट्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस 2022 का. ठीक है, जाके देख लीजिएगा. आई थिंक देयर दे हैव आस्क्ड सम अदर पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि एक ट्रायंगल है. यू हैव 1 2 3 4 5 पॉइंट्स. यू हैव 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स. 1 2 5 6 7 पॉइंट. तो सबसे पहले तो दोनों को ऐड कर दो ब्लाइंडली से. 11 + 7 is 18. So out of 18 if I select any 3 points, this will be the maximum number of triangle form. लेकिन ये गलत आंसर होगा क्योंकि इसमें ऐसा भी पॉइंट आ गया जहाँ पे ये तीनों एक साथ है, तब तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ. इस ओवर काउंटेड. तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 में से कोई भी 3 पॉइंट हटाएंगे, 6 में से कोई भी 3 पॉइंट हटाएंगे, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट. अब बताओ कोई और हटाना पड़ेगा क्या, कोई और हटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर इफ़ आई एम टेकिंग 1 पॉइंट फ्रॉम एयर, 1 पॉइंट एयर और 1 पॉइंट एयर, राइट, सो ऑटोमेटिकली ये 2 यूनिट ट्रायंगल को दे देगा. तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा. जीपीएपी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन से कर लेना. इस पे अदर यू कैन यूज सीरीज एक्सपेंशन, जैसे इसको 5 + x/3 टेलर सीरीज. नेक्स्ट टर्म 1/3 × 1/3 -1 दिस स्क्वायर. और बस सेकेंड ऑर्डर तक ले जाओगे, सब कट खुट जाएगा. ठीक है, वो डायरेक्ट हो जाएगा. और लॉपिटल्स रूल से भी कर सकते हो. आई थिंक इन 1 लाइन ओनली इट विल कम. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x7. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ओके क्वेश्चन. x7 का कोफिशिएंट, सो इफ आई विल टेक कोफिशिएंट ऑफ एनी नंबर, बिकॉज यू नो एनी पावर विल बी 1 to the power सम p -x का पावर q -x² का पावर r एंड x³ का पावर
कितना एस, ओके, और 6 में से पी को उठाएंगे, फिर जो है मीन्स बेसिकली यू नो कॉपी में रिमेनिंग 6 माइनस पी में से क्यू को, रिमेनिंग 6 माइनस पी माइनस क्यू में से आर को, रिमेनिंग 6 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर में से एस को. In fact, this will come nothing but 6 factorial by p factorial, q factorial, r factorial, s factorial. Now you can clearly see in order to get, now we want coefficient of x का power 7, तो ये तो p है, ये कुछ नहीं है, तो q plus 2r plus 3s को 7 होना होगा. तो suppose s value is 1, ठीक है, if I take s value is 1, so what is the possibilities? So q plus 2r equal to 4. So for S1 again if I put R0 then Q has to be 4. Okay, for S1 if I'll put R1 then Q has to be 2. For S1 if I'll put R2 then Q has to be 0. तो ऐसे आप केस मेकिंग कर लीजिए. Again S2 then this will give 6. So only possibilities is 0 and 1, क्योंकि यहाँ से नहीं आएगा. तो 4 केस आएगा, चारों का ऐड कर लो, वो आंसर हो जाएगा. तो ये अच्छा क्वेश्चन था मल्टीनोमियल पे. वैसे someone can think from box method also, which I usually tell. Imagine you have 6 box and each box contains item 1 minus x square minus x cube. So when you are multiplying this 6 box, in how many ways you can produce x7? अब x7 के 6 box में से लाने का क्या तरीका है? या तो एक बॉक्स क्यूब दे, अगर सपोज एक बॉक्स पावर 3 दे दिया फर्स्ट बॉक्स, अब आई नीड 4 more x, ठीक है, तो 2 बॉक्स 2 पावर करके दे दे, 3 बॉक्स आई हैव कंज्यूम 7 पावर्स. नाउ रिमेनिंग 3 बॉक्स मस्ट गिव नो पावर ऑफ एक्स, मीन्स मस्ट गिव कॉन्स्टेंट. ऐसे करके भी आप कर सकते हो, बट इनफैक्ट दैट थॉट प्रोसेस इज फंडामेंटल थॉट प्रोसेस इज इंजेक्टेड इन मल्टीनोमियल. एफ ऑफ एक्स देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. अब देखो इसको एक और तरीका से, क्योंकि फिर से क्वेश्चन आ गया तो लेट्स डू डिफरेंटली. अब यहाँ पे वन मोर ऑब्जर्वेशन वाज देयर. कैन यू सी एफ ऑफ माइनस एक्स, इफ आई रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स, दैट्स आइडिया केम बिकॉज अगर x के बदला माइनस एक्स डालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस. सो क्वेश्चन बिकेम 1 बाय एफ ऑफ एक्स. अच्छा, अब ये तो इंटरेस्टिंग हो गया. एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बिकेम 1. तब यहाँ से भी कुछ फील्ड से कैन यू थिंक लाइक हाउ दिस विल हेल्प यू टू फाइंड और टू गेट एटलीस्ट सम हिंट फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. ठीक है, ये आप खुद से सोचिएगा जो हाउ इट कैन हेल्प यू. क्योंकि देखो एक हिंट अगेन आई एम गिविंग यू. इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज 1, तो सपोज एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, इमेजिन. तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा था तो माइनस एक्स इज 1 बाय एफ ऑफ एक्स, दैट 0 प्लस पे गोइंग इन्फिनिटी. अब ये 0 पे चले जाएगा, 0 पे जा रहा था तो वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग द फील. ठीक है, तो उस फील से भी यू कैन ट्रैक मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस लाइक दिस. ओके, सो ओवरऑल द पेपर वाज मॉडरेट टू इजी पेपर, एंड इनफैक्ट द फिजिक्स पेपर वाज लिटिल बिट बेटर देन द लास्ट टाइम. तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन पकड़ो और सॉल्व कर लो. ठीक है, 15 to 20 क्वेश्चन तो मैथ्स में भी आप सॉल्व पक्का कर ही लेना.